More breaking updates, in fact, now coming. The Central Investigation Agency, NIA, has arrested a man named Aamir in connection with the Red Fort blast. The NIA has arrested Aamir Rashid Ali, a Kashmiri resident from Delhi, the owner of the car used in the blast, and one of his associates of suicide bomber Umar. Investigations reveal that Aamir helped Umar Un Nabi purchase the car that was later used in the blast to plant an IED. The NIA has also confirmed through forensic tests that the driver killed in the car was Umar Un Nabi, a resident of Pulwama and an assistant professor at the Al Falah University. The agency has seized another vehicle belonging to Umar. 73 witnesses have also been questioned so far. What are the latest details coming in, Javed? Fresh arrests made, fresh vehicle seizures also, more action by the NIA. बिल्कुल, देखिए एनआईए लगातार सेंट्रल एजेंसी जो इस पूरे लाल किले के पास में ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और इस वक्त एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली कि जिस I-20 कार को उमर चला रहा था, उमर नबी, और जो इस ब्लास्ट में मारा गया, और सैंपल के बाद, डीएनए सैंपल के बाद ये साफ हो पाया कि कार के अंदर जो मरने वाला शख्स है इस ब्लास्ट में वो उमर नबी है। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए ने आमिर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जो कश्मीर मुल्क का रहने वाला है, और इस पूरे मॉड्यूल को लेकर जिस तरीके से सुसाइडर जो कार का इस्तेमाल होना था इसको खरीदने में से लेकर सारे इस कॉन्स्पिरेसी में जो है एक आमिर नाम का एक शख्स जो है कश्मीर मुल्क से सेंट्रल एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अब तक 73 लोगों के बयान को दर्ज किया जा चुका है, और एक और गाड़ी को भी जो एजेंसी है उसने सीज किया है आमिर के पास से, और अब आमिर को गिरफ्त में लेकर जो इस पूरे मॉड्यूल को लेकर पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इसका मास्टरमाइंड है, जो इसका मेन मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा हैंडलर्स है उसको लेकर भी अब एनआईए जो अपनी तलाश और तेज हो गई है। देखिए 10 नवंबर के बाद से जिस तरीके से 11 नवंबर के बाद 12 नवंबर यानी कि ब्लास्ट के तीसरे दिन जो है केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को गृह मंत्रालय की तरफ से इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, और एनआईए की कई टीमें जिसमें विजय साफे जो कि एडीजी एनआईए थे उनके नेतृत्व में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन देखिए इसमें एक चीज और है, सोर्सेस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आईएसबीटी के पास जो हनुमान मंदिर है उस रूट को भी इन्होंने रैकी की थी, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये जो पार्किंग था जहाँ पे इन्होंने गाड़ी पार्क की थी उसके बाद जहाँ पे गाड़ी निकाली, और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं डेटोनेटर्स के इससे जो ये गाड़ी में पूरी तरीके से जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये जो गाड़ी था वहां से पार्किंग से निकालने के बाद इन्हें कहीं और ले जाना था। लेकिन जिस तरीके से सोमवार को ये घटना हुई, और ऐसा एजेंसी इस बात को भी लेके जांच करी कि मंगलवार का दिन जो आईएसबीटी के पास हनुमान मंदिर है वहां पे काफी भीड़ भाड़ होता है और वो वहां से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये इस गाड़ी को वहां पर भी लगाने की ऐसी इनकी साजिश थी। लेकिन फिलहाल अब जो आमिर है, आमिर गिरफ्तार हो चुका है, और इसमें उमर जो कि इसमें मारा जा चुका है, डॉक्टर मुजम्मिल, इसके अलावा शाहीन शाहिद, इसके अलावा डॉक्टर आदिल और कई डॉक्टर सज्जाद, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अब इस वक्त एनआईए के गिरफ्त में है, और कई ऐसे और डॉक्टर्स हैं जिनको लेकर अब जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो 15 डॉक्टर्स हैं उदय, उनकी भी तलाश की जा रही है जो मिसिंग अल्फला से। और आमिर के बारे में बता दूं कि आमिर भी अल्फला से ही था, और यहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बताया जा रहा है, और यहाँ से ही वो यहाँ पर वो फैकल्टी में क्लास लेता था। अब जिस तरीके से एक पूरा नेक्सस है डॉक्टर्स की, इस पूरी जो एक पूरे टेरर मॉड्यूल का एक नेक्सस सामने आया है, इसको लेकर आमिर जी बिल्कुल कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। द न्यू डायमेंशन इन द रेड फोर्ट ब्लास्ट प्रोब इज ओपनिंग। Once regarded as a bright academic mind at the Al Falah University, Umar, the terrorist, reportedly used his authority on campus to push hardline ideology among students who looked up to him. Investigators have recorded the testimony of a young woman from Imphal who confirmed she was in contact with Dr. Umar, though she denies adopting his ideology. She was allegedly given a Muslim identity called Maryam after coming in contact with him. As per sources, the girl told interrogators that she listened to Umar because he was a senior faculty member, but she denied adopting his ideology. So reportedly, this individual, Sanjay Sahai, this terrorist Dr. Umar, was trying to indoctrinate young students as well. This student from Imphal talking about how he gave her an Islamic identity and tried to indoctrinate her as well, but failed. There is no denying the fact that radicalization of these minds, inclusive of all the doctors, is at the core of this extremist plot, is at the core of what we call as the white-collared terror.
And this girl did not finally adopt or got converted to that ideology, or Umar was not able to radicalize her in a manner in which he wanted. But the Maulvi in Jammu and Kashmir, I think he had left the studies after third standard. And then he went to the madrasa, he got his training, and he was in a position with whatever little education he had at the formal level to radicalize these people, wherein they started believing that the medical profession itself was a smaller or lesser part of their existence, and the bigger part of their existence was to wage war against the infidels. So that is broadly what I can understand. So I still of the opinion that it is a much bigger radicalization factory. It is a radicalization industry at scale. So let's be very, very clear about it. So the ideological brainwashing, and if you read any of their literature, they first and foremost is they need to hack your brain and take your brain under their control. Once that transpires, then it becomes a very, very easy journey. From there, you get into the person who has been indoctrinated, the fellow who was third pass. So he indoctrinates a MBBS MD. The capability of this MBBS MD to indoctrinate other people at his level by his wit, knowledge, brilliance, and being a part of that particular brotherhood or bonhomie or the professional group becomes much larger. And that is why one or two of these mullahs, with their half-baked knowledge but completely committed to this type of ideology, they brainwashed a couple of these people, and it spreads in a manner as is wildfire. We start literally believing as if these people are uneducated people, even uneducated people will not buy that idea. So radicalization is a very, very serious affair, and there have been efforts by the government, not today, for a last at least 2 decades or more, to initiate a de-radicalization process. There is a strategy for the de-radicalization process. I'm convinced of the fact that huge amount of work is being done in that sector, but still instances of this nature, modules of this nature, because of the persistent money and variety of other things which comes from across the borders, and handlers and powers that be who are completely committed to keep us in an unsettled state. So that is at the core of it.